Good evening, everyone, and thank you for joining us today. In this webinar, we will be discussing the new Secondaries Fund. We will soon be joined by our expert speakers, Mr. Hemant Daga, co-founder and CEO at New Asset Management, and our CEO, Mr. Manish Kadvi, who will walk us through the objective of this session. Hello, everyone. I am Sartaj, your moderator for this session. Without further delay, let's welcome Manish. Hi, Manish. Over to you. Thanks for joining in. So today we have a great speaker in Hemant who will explain us this product to us. I think what I'll try to start off this session is by, so these are the things which we'll ask Hemant, or we'll try to answer these questions. Why unlisted equities? Why does that make sense to an investor? Why does that make sense to a distributor like you? And some general trends, because it's not a new industry, it is new for a lot of our partners, but it's not new in that sense, right? So who is selling, what is the volume that is already happening? तो ये तीन चीज समझेंगे हेमंत से, और फिर उनका जो प्रोडक्ट है, of course he will explain us that. But partners should know that this is a category which is going to last very long. यानी ये कोई सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई NFO टाइप नहीं है कि हजारों आएंगे, right? And you need a special kind of expertise to run such products, which Neo I'm sure has, and they have a team which is very good at this in this space. So yeah, why should clients invest in this product? Why should distributors distribute this product? And broad general industry, and then the Neo Secondaries Fund. So these are the four things. If all of us can understand, then it'll be great. And again, I keep saying this with all the sessions or all these products that are new to you. You will need help in closing the customer calls, and we all are here to support you. Neo's team is present fairly across India. So whatever customer calls you can generate, you should take them along to close those deals. Yeah. So let's get Hemant on the call, please. Hi, Hemant. Welcome. Thank you, Manish Bhai. Thank you, Funds India. And a very warm welcome to all the partners for joining this call. I think, as Manish Bhai rightly said, I think there are three very pertinent questions that we should answer before we begin with the product itself. Why is unlisted important as a category? I think that is a very important question. So, a couple of things I want to add in this regard. See, firstly, unlisted is truly non-correlated to listed markets. And currently, when I speak to a lot of the partners, Manish bhai, जैसे हम लोग बात करते हैं, 99% of the partners have their exposure in listed markets, and so their fortunes are linked to listed markets. So technically, unlisted gives your clients as well as you a very, very complementary opportunity. And I think that is a very important point. It is truly diversified. The second important thing I want to highlight is, and when we will go through this presentation, I think the kind of companies we are investing in, and this is also very important, those companies don't exist in public markets, right? तो उस तरीके की कंपनी पब्लिक मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही. तो जब वो कंपनी लिस्ट करेगी ना, तो जो उसको आईपीओ प्रीमियम मिलेगा, दैट विल बी सब्सटैंशियल, एंड दैट इज समथिंग दैट क्लाइंट्स शुड नॉट मिस आउट. पार्टनर्स शुड आल्सो पिच टू क्लाइंट्स, बिकॉज सम ऑफ आवर कंपनीज आर ट्रूली यूनिक. इंडियाज लार्जेस्ट अडल्ट डायपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अब ऐसी कंपनी पब्लिक मार्केट में है ही नहीं, राइट? इंडियाज leading data KYC digital onboarding company. Now these companies are not there. This is like so some of these companies are very unique, which will be created in private markets. And private से public जाने में ना बहुत सारा juice निकल जाता है मनीष भाई. So this fund gives you an opportunity to participate in that window. So if I have to answer your question, why private markets? I think one, genuine diversification है client के लिए, partners के लिए भी. And two, I think some of the companies will not be available to you in the public market space. By the time they come to public markets, वो IPO में 50% ऊपर खुलता है, किसी के हाथ में कुछ allocation आता नहीं है, then people say, oh, all the juice is gone. So this is a fund to actually participate in that journey. So post listing, like in India, you expect stocks to deliver, let's say, 12 to 15% returns. So when they are in this stage, when you are investing or the fund is investing into that is the stage when they generate twice those returns, right? Which get captured by AIFs. Yeah. Absolutely, which can be captured by AIFs, because mutual funds को क्या है, listed stocks मिलते हैं. तो मैं जिसकी लिस्टिंग करूंगा उसका रेसिपिएंट आपका म्यूचुअल फंड बनेगा. करेक्ट. दूसरा आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हाउ मच ऑफ दिस हैज गॉट सोल्ड इन द लास्ट 1 year.
So one, I think this is a giant opportunity, Manish bhai, and you rightly said this is an opportunity which nobody can miss. So just to put some context, AIF की दुनिया में in the last 1 year, approximately 6,000, 7,000 crores of secondaries funds have got sold. Okay, so that is a large opportunity because इसमें क्या है, commission structures are also very juicy. This is the only thing that pays upfront commission to partners. So from a partner perspective, this is very juicy. But now, who are the wealth channels that are actually capitalizing on this? The wealth channels are typically the national distributors and the large wealth channels. And it's not even reaching the partners. And I think when I was speaking to Manish Bhai, he was saying, Ki, Hemant, we have to showcase this to our partners because these are opportunities which are going to be the future. It is like saying कि 20 साल पहले जिसने SIP बुक बनाया आज उसी का बुक है, राइट? तो आज जो सेकेंडरीज फंड से चालू करेगा और जो चीज बिक रही है 6-7 हजार करोड़ बिक रहा है सेकंड और प्राइवेट मार्केट में डील्स भी कितने सारा हुए मनीष भाई तो आई एम नॉट इवन एडिंग दोज सो फंड्स आर सेलिंग 6,000 7,000 crores. Apart from that, private deals have gone through the roof, right? How much money has been made in NSC by doing transactions from one client to another? So this is effectively a pseudo way to play that and for partners to enjoy that. So this is a product that should not only be restricted to wealth channels, it is a product that should be available to more and more distributors, right? And the third thing that you said is, as I repeatedly keep saying, I think it is a win-win for clients because the returns are juicier, companies are unique, it is diversified. It is also, see, finally it has to be a win-win for everybody. Client के लिए भी अच्छा होना चाहिए पहले तो और फिर partner के लिए भी अच्छा होना चाहिए. In this market, this is the only opportunity that gives partners an ability to earn upfronts. And it is the only opportunity which differentiates conversation. कल आप जा रहे होगे क्लाइंट के पास 200 पब्लिक मार्केट फंड्स है 200 म्यूचुअल फंड्स है उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है राइट बट जैसे आपके बड़े क्लाइंट्स है अगर उसको कुछ नॉवेल्टी चाहिए कुछ डिस्टिंक्शन चाहिए अच्छी कंपनीज है दिस इज व्हाट विल अट्रैक्ट योर अटेंशन this will make you stand out in a client conversation because clients already have access to some of this as partners we have to show them that yes I can also show you this unique opportunity मैं भी कर रहा हूं मतलब ये सिर्फ वो बड़े वेल्थ चैनल्स नहीं कर रहे हैं मैं भी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं सो आई थिंक दोज आर द कपल ऑफ पॉइंट्स So this मनीष is भाई like, this is like, I started my career in mutual funds in 2003. So if, anybody who started then sold the first set of SIPs to the customer, sold the first set of mutual funds to the customer, right? Reap the benefits of the industry going through the roof, right now. So I think so starting early, like we tell our investors, कि आप, start early. The same manner, distributors, if this is something which is going to be a multiple decade opportunity, right? They should not wait and watch and waste time on. They should be the first ones. And trust me, people are bored of the NFOs, bored of the mutual fund propositions. If you take something which is unique, which has the power to generate more returns than listed equities, I'm sure you will have the customer's ears and his attention. Yeah, Hemant. absolutely absolutely so I think that is the context setting to this call with now maybe I will just straight away move to the presentation. Yes. I think all of you can see the slides. Yes. Yes. Just couple of things on Neo Asset Management. So basically, Neo Asset Management currently we manage close to 14,000 crore of assets, and we do three things: private credit, private equity, and infrastructure. We are a Sequoia funded company. Founding team, we were running Edelweiss Wealth and Asset Management, so complete, very very competent team. If you look at some of the people, we have worked in the industry for now 20-22 years. So you are with a team which is super competent. Nitin Jain was the chairman of Edelweiss Wealth and Asset Management. I was the CEO of Edelweiss Alternatives, and Shrikant was the CEO of Motilal Wealth. So आपको बहुत ही competent team मिल रही है जो आपको ये deliver कर रही है. Now, what do we do as part of the secondaries fund? Let me come to that. ठीक है. So basically, what we are doing as part of the secondaries opportunity. Manish bhai, can I take a second? I think I want to just change this presentation. Can I Yeah, can I yeah, just yeah. second, please? Please do. No rush. Just give me a second, please. So No worries. basically, जब तक presentation load हो रहा है, मैं इस concept को थोड़ा समझाना चाहूंगा. Secondary market होता क्या है? So if you look at the unlisted market, which is typically called as private equity, right? So what do people do? Companies which are private, people put money in those companies, and that is called private equity. तो उसमें typically जब आप कंपनी में पहली बार पैसे डालते हो तो उसको प्राइमरी मार्केट डील्स बोलते हैं, राइट?
प्राइमरी किया आपने कंपनी में, मतलब कंपनी के अंदर पैसे घुसाए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कंपनी में पैसे नहीं डाल रहे हैं। वॉट वी आर डूइंग इज वी आर एक्चुअली ट्राइंग, तो कोई कंपनी में ऑलरेडी पैसे जा चुका है, राइट? We are actually going to do a secondaries in that. What we are saying is there is an existing investor, उसको एग्जिट चाहिए, तो बेसिकली इसको सेकेंडरी बोलते हैं। प्राइमरी क्या बोलते हैं, जब आप कंपनी में पैसे डालते हैं। तो टिपिकली जब आदमी प्राइवेट इक्विटी करता है तो वो क्या सोचता है कि अनलिस्टेड कंपनीज बहुत लंबा टाइम होता है। तो एट नियो वी डोंट वांट टू डू अ लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। व्हाट वी आर सेइंग, कंपनी डिस्कवर्ड है, एक्चुअली मुझे ना पूरी डिस्कवर्ड कंपनीज में पैसे लगाने हैं, बट मेरे पैसे क्यों बनेंगे, क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को लिक्विडिटी दे रहा हूं। तो बहुत सारे सिचुएशंस में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई फंड है, उसने पैसे लगाए कोई कंपनी में, अब उस फंड की लाइफ कंप्लीट होने आ गई, राइट? तो नाउ दैट फंड वांट्स लिक्विडिटी, so where will it come for liquidity in the market? That is called a secondary transaction. So basically we are providing secondary to existing investors in unlisted companies, and that is the concept of private equity secondaries. Basically nutshell में आपको अगर समझाना है तो लेट स्टेज कंपनीज है, ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, 10 साल से कंपनी चल रही है, मुझे कंपनी डिस्कवर नहीं करना है, और मेरे इन्वेस्ट करने के 3 से 4 साल में आईपीओ आ जाएगा। तो अपने को आईपीओ का पॉप भी मिलेगा, कंपनी डिस्कवर करने का रिस्क नहीं है, एंड द फैक्ट दैट आई एम प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू समबडी एक्चुअली गिव्स मी सम डिस्काउंट आल्सो, बिकॉज अगर आप कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को एग्जिट दे रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है। अगर जैसे कोई फाउंडर को लिक्विडिटी चाहिए तो आप उससे माल थोड़े सस्ते में खरीदोगे। बेसिकली प्रोवाइडिंग द लिक्विडिटी एट द राइट टाइम गिव्स यू अ गुड एंट्री प्राइस। So, and this is a large opportunity globally. If you look at secondaries has done very, very well. See, one of the reasons why we chose this opportunity, India में तो ये data available नहीं है, but अगर globally आप देखें, globally secondaries funds have delivered greater than 20% dollar compounded returns. 20% से ज्यादा, जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ना वो सेकेंडरीज की है। 23% डॉलर रिटर्न्स, डॉलर में 23% रिटर्न्स बने हैं। निफ्टी ने इसी पीरियड में 13% डॉलर रिटर्न्स दिए, और यही मैं और मनीष भाई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि पब्लिक मार्केट में सारा जूस निकल जाता है, सेकेंडरी में क्या होता है, आई एम एबल टू कैप्चर दैट जूस, हेंस द अपॉर्चुनिटी इन दिस वर्सेस लिस्टेड मार्केट्स is substantially higher. So if Nifty is delivering 13-15%, our fund can deliver 24 to 25%, and we have seen this opportunity play out in a market as developed as the US market. So basically what have I told up till now, जो कंपनीज वेल डिस्कवर्ड है उनको हम, उसमें जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनसे हम बेसिकली सेकेंडरी खरीदते हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के सेकेंडरी खरीद के ये अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। ये अपॉर्चुनिटी दुनिया में बहुत बड़ी है और इसमें रिटर्न्स बहुत अच्छे बने हैं, राइट? एंड द ऑब्वियसली द अदर पॉइंट्स रिमेन, इट इज वेरी कॉम्प्लीमेंट्री, डाइवर्सिफाइड एंड यूनिक। नाउ एट नियो व्हाट डू वी डू? This is a very interesting slide. Maybe I'll spend a little bit of time on this. तो देखो, जब भी कोई प्राइवेट मार्केट करता है ना तो थोड़ा आदमी को डर लगता है, राइट? डर क्यों लगता है? क्योंकि जो अर्ली स्टेज होता है, अर्ली स्टेज क्या है ना, 8 से 10 साल का होल्डिंग पीरियड है। तो जब 8 से 10 साल की होल्डिंग पीरियड है तो आदमी को समझ में नहीं आता है। जब आप प्राइमरी करते हो, दैट इज ग्रोथ स्टेज। हम लोग क्या कर रहे हैं इन नियो, आवर फोकस एरिया इज वेरी वेरी लेट स्टेज। इफ यू सी द ग्रीन बॉक्स, लेट स्टेज सेकेंडरीज इज आवर फोकस एरिया। बेसिकली मनीष भाई, मेरा होल्डिंग पीरियड क्या है? 4 से 5 साल। 2 से 4 साल में कंपनी के आईपीओ होने लगेंगे, एंड बहुत प्रिडिक्टेबल है बिकॉज इसमें कंपनीज ऑलरेडी डिस्कवर्ड and the risk is very low. So effectively friends, what we are doing is we are finding mid-size companies, mid to large cap companies which are doing phenomenally well, which are not available in public markets, and trying to offer them to our clients. Now if you look at the neo philosophy of doing things, this is a very important slide and I will spend some time on this. So as part of the neo secondaries fund, we want to invest only in EBITDA positive companies. A lot of times people feel private companies है तो loss making होगा। lot of loss making companies came to IPO, right? जब पेटीएम आया था loss making था। आज के दिन में जेप्टो का बहुत माल ऊपर नीचे हुआ, market transacted a lot of Zepto. But at Neo, we only want to invest in profitable companies. This is something that I want to tell you. Profit is super important. The other thing that is important for us is, देखो फ्यूचर तो सबने देखते हैं, इक्विटी मार्केट्स इज अबाउट फोरकास्टिंग द फ्यूचर,
बट एट नियो वी वांट टू मेक टैंजिबल रिटर्न्स। मनीष भाई, टैंजिबल रिटर्न्स का क्या मतलब है कि पहले हिस्ट्री में तो परफॉर्म करो। तो एक तो मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए और लास्ट 3 साल में रेवेन्यू ग्रोथ शुड बी एटलीस्ट 20 to 25 to 30%। सो बेसिकली हिस्ट्री हैज टू बी गुड, रेवेन्यू ग्रोथ हैज टू बी ग्रेटर देन 20%, प्रॉफिटेबिलिटी होना चाहिए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट शुड बी अ लीडर। द कंपनी शुड बी अ लीडर इन दैट बिजनेस सेगमेंट। This is a very important point. See, finding leadership is a very, very rare trait. And you guys will understand, हमने सबने public market देखा है. When companies list, when leaders list in public markets, they command disproportionate premium. You know, वो हमेशा होता है ये कंपनी ना लीडर है तो उसको आईपीओ में प्रीमियम मिलना चाहिए. So at Neo now we love leadership. तो बेसिकली मेरे को किस तरीके की पोर्टफोलियो बनानी है? आई वांट टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो विच कंसिस्ट ऑफ लीडर्स विच आर प्रॉफिटेबल and where revenue is growing 20 to 25 to 30% historically. So imagine that you are getting a portfolio which is a leadership portfolio, profitable portfolio, and massive revenue growth. And the icing on the cake is because I am providing secondary, I am giving liquidity to someone, right? So I am able to get a small discount. अगर मैं किसी को लिक्विडिटी प्रोवाइड करूंगा तो मेरे को 10 से 15% का डिस्काउंट तो मिलेगा, and that is a massive discount because 10 to 15% discount over a 4-year fund life means 2 to 4% efficiency added every year, right? This is a very important point. I want to repeat this. When I get a discount of 10 to 15%, सिंस द फंड लाइफ इज ओनली 4 years, इफेक्टिवली आपको 2.5 से 3% का बेनिफिट मिल रहा है हर साल, और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो इफेक्टिवली व्हाट आर वी सेइंग? वी आर सेइंग, Hemant, can I just stop you for a second? यस प्लीज डू। So, one of the best examples of what you're doing here is probably Funds India, right? Funds India used to be owned by four Indian PEs, right? Which was Faring Capital, and then Westbridge bought it. So, it was an established company. It was a profitable company, right? It was, making 20 crores PAT, right? And Westbridge bought it for like 200 crores, which is 10 times. The reason I think so, what people don't know is why would a existing PE sell a company, right, at a discount? What do they need the liquidity for, right? वो क्यों बेचेगा अगर इतनी अच्छी कंपनी है, लीडर है, प्रॉफिटेबल, तो क्यों बेचेगा? Can you just spend a minute on that and then we can go to this slide? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अभी हमने खुद न्यू में वी हैव बॉट 3 कंपनीज फ्रॉम वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट वीसी प्लेयर्स। अब उसको एग्जिट क्यों चाहिए? उसको एग्जिट चाहिए क्योंकि उसका फंड लाइफ कंप्लीट होने आ गया, Correct. राइट? अब उसकी फंड लाइफ कंप्लीट होने आ गई, वो कंपनी के आईपीओ में अभी 2 से 3 साल बचा है। अब अगर उसकी फंड लाइफ कंप्लीट होने आ गई है तो सेबी तो बोलता है पैसे लौटाओ। अगर आईपीओ में 2 से 3 साल बचा है मनीष भाई, तो अब उसको तो अपने क्लाइंट्स को पैसे लौटाने हैं, राइट? Which is why some of times these people are forced to sell. The other reason people are forced to sell is, see, in a traditional private equity fund, which is a 10-year fund, right? Clients also want बीच बीच में कुछ पैसा आते रहना चाहिए। तो 10 साल के जो फंड्स चलाते हैं जो लोग, उनको बीच में अगर क्लाइंट्स को पैसे दिखाने हैं तो वो क्या करते हैं? वो थोड़ा अपना इक्विटी बेच के थोड़ा कैश फ्लो जनरेट करते हैं, राइट? जैसे नहीं होता है मार्केट में, जैसे पब्लिक मार्केट में लोग क्या करते हैं, बोनस शेयर आया तो आधा एक टुकड़ा बेच दिया, या कोई शेयर लिया, वो अगर 3 गुना हो गया तो लोग अपना कॉस्ट निकालने के लिए 1/3 बेच देते हैं और बाकी शेयर को राइड कर लेते हैं, राइट? Similarly, in private equity players, if a stock has rallied substantially, they sell a small part so that they book some profit to show to their clients, and they keep riding the balance of the wave. So there are multiple reasons why these exist. तो कंपनी अच्छी है, जैसे आपके पोर्टफोलियो में कोई कंपनी 1 से 3 गुना हो गया, कंपनी बहुत अच्छी है, बट आप क्या करते हो? अच्छा चलो 1 रुपया का बेच देता हूँ, मेरा कॉस्ट तो निकल जाएगा, अभी 2 रुपया को फ्री खेलता हूँ। तो इवन प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स आर प्लेइंग द सेम वे, राइट? अगर एक का 3 रुपया हो गया, वो थोड़ा बेचता है, जब वो थोड़ा बेचता है, दैट कम्स टू पीपल लाइक अस। So there are multiple reasons why people sell. But coming to the main point, the point that I wanted, where I left you guys with, what are we creating? हमारी पोर्टफोलियो कैसी है? क्योंकि जब आप क्लाइंट के पास कल जाओगे, क्लाइंट को क्या बोलोगे? मैं क्या लेके आया हूं? बेसिकली यू आर शोकेसिंग टू योर क्लाइंट्स अ पोर्टफोलियो विच हैज लीडर्स इन देयर बिजनेस सेगमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब आईपीओ होगा, लीडरशिप को दबा के प्रीमियम मिलेगा। दूसरा, सब पॉजिटिव कंपनीज है, कोई भी लॉस मेकिंग नहीं है। तीसरा, रेवेन्यू ग्रोथ इज हेल्दी।
एंड चौथा, बिकॉज इट इज अ सेकेंडरी, बिकॉज लिक्विडिटी प्रोवाइड किया आपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को, तो थोड़ा डिस्काउंट भी मिला। एंड थोड़ा नहीं है, 10 से 15% डिस्काउंट ओवर 4 years इज अ 2 to 3% बेनिफिट पर एनम, 2 to 3% बेनिफिट पर एनम. So basically, see, whenever we launch funds at Neo, we want to be very clear कि अपने जो returns बन रहे हैं ना, वो ठोक बजा के बन रहे हैं मनीष भाई. एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेन आई एम सेइंग कि मैं 24 से 25% डिलीवर करूंगा, उसका कुछ रीजन होना चाहिए. सो आई एम नॉट सेइंग दैट आवर कंपनीज विल डिलीवर 24 to 25. आई एम सेइंग माय कंपनी इज प्रॉफिटेबल. अच्छा, इसकी रेवेन्यू ग्रोथ 30% हो रही है. इफ यू सी आवर कंपनीज व्हिच आई एम गोइंग टू कम टू वेरी सून, if the revenue growth is 30%, can I assume fundamental returns of 20%? 30% revenue growth company, 50% revenue growth company जो burn नहीं कर रहा है, उसमें I can assume 20% fundamental IRR. Answer is a Yes. yes. My Yes. discount is a 2 to 3% benefit per annum, which I have tried to explain. Plus, I can get IPO pops. So basically, rarely in life do you get a strategy जहां आपके 2 से 3 levers होते हैं. सी, कोई भी स्ट्रेटेजी में ना आदमी क्या बोलता है, अच्छा मेरी कंपनी फंडामेंटली अच्छा कर रही है, इसमें मेरे पास उसको छोड़ के भी 5-6 टका बनाने के चांस है. तो एक तो मेरे फंडामेंटल रिटर्न्स है, दूसरा मेरा डिस्काउंट का लीवर है, और तीसरा मेरा लिस्टिंग पॉप का लीवर है. कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसी आपको मिलेगी ही नहीं मार्केट में. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटेजी. अगर मैं बोलता हूं मैं 25 से 26% दूंगा ना, उसमें 5 से 6% तो डिस्काउंट और लिस्टिंग पॉप का पार्ट है, और 20% मेरे फंडामेंटल का पार्ट है. राइट? एंड दैट इज द ब्यूटी दैट यू वांट टू हाईलाइट, दैट क्लाइंट्स को पैसे बनाने का टेंजिबल हो जाएगा ये. एंड विच इज रिफ्लेक्टेड इन द यूएस मार्केट्स. इफ यू सी द यूएस मार्केट्स ओवर द लास्ट डेकेड, दीज फंड्स हैव डिलीवर्ड 23% dollar returns. Dollar, it is unreal returns secondaries have delivered to clients. Now if you look at the companies we have invested in, because it is very important, does it tie in with our philosophy? अभी तक मैंने क्या बोला, लीडरशिप, राइट? सो नियो में हम लोग जब भी कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, एज पार्ट ऑफ आवर इक्विटी इन्वेस्टिंग फिलोसफी, मनीष भाई, 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. वन, गवर्नेंस शुड बी सुपर गुड, बिकॉज एवरीबडी नोज पब्लिक मार्केट लव्स गवर्नेंस. जितना गवर्नेंस आए उतना ज्यादा लिस्टिंग पॉप. दूसरा, कंपनी रनवे फॉर ग्रोथ ना शुड बी 2 decades. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हम लोग क्या बोलते हैं, रनवे फॉर ग्रोथ शुड बी 2 decades. जैसे अभी इस कॉल के पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इंडिया में वेल्थ एंड एसेट मैनेजर्स आर ट्रेडिंग एट 30, 40 P, 50 P मल्टीपल्स. व्हाई इज दैट? बिकॉज अपने बिजनेस में हम लोग ये नहीं सोच रहे कि अगले 10 साल तक अपना बिजनेस रहने वाला है, राइट? एंड दैट इज व्हाई दीज कंपनीज आर गेटिंग 20, 30, 40 मल्टीपल्स, बिकॉज हर दिन आके ये नहीं सोच रहे कि कल बिजनेस होगा नहीं होगा. So at Neo, we fundamentally believe runway for growth should be 2 decades, because equity market ना is like a discounting machine. वो 20 साल की earnings को discount कर देता है. So governance, runway for growth and leadership. Leadership is a beautiful category. अगर तुम लीडर हो ना, मतलब तुम स्पेशल हो. लीडर कोई कंपनी ऐसे नहीं बनती. So this is our first investment, friends. This is India's largest adult diaper manufacturing company. Okay. Once again, important points: leadership, right? दूसरा, it has 40% market share. तीसरा, जो मैंने बोला था, रनवे फॉर ग्रोथ. अडल्ट डायपर तो अभी चालू हो रहा है. इंडिया में धीरे धीरे पॉपुलेशन की एज बढ़ेगी, धीरे धीरे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी. और पहले क्या था ना, इन अ लॉट ऑफ द हाउसहोल्ड्स, गोइंग टू अ केमिस्ट शॉप, अ मेडिकल शॉप, बाइंग अ अडल्ट डायपर वाज अ टैबू. But now with quick commerce, e-commerce, it is exploding, because now with the click of a button, the diaper gets delivered to the house. So from a macro environment perspective, this is a beautiful business to be in. This is a company which controls 40% market share. Now, why did the opportunity arise? Because the founder wanted some liquidity and some end of the fund life wanted liquidity. So Manish bhai, is why does this opportunity come? Because an existing private equity investor, उसका fund life complete हो रहा था, इसलिए उसने अपना माल मेरे को बेचा. Look at this company. As I said, profitable. Last 10-year revenue growth 20% compounded. Now, once again, this is a unique company. It's not available in the public market. तो आपको ये म्यूचुअल फंड में मिलेगा ही नहीं. एक जेन्युइन डाइवर्सिफिकेशन देगा आपको. रनवे फॉर ग्रोथ मैसिव है. एंड इन द फंड वी हैव गॉट इट वेरी चीप. So we have invested in this company at close to 2 times sales.
Friends, we have invested in this company at close to 2 times sales. It is profitable. D2C consumer brands typically trade at 4 to 5 times sales. If you look at competitive analysis, मोतीलाल ओसवाल invested in a adult diaper company which was not a leader, जो आप लोग नीचे देख रहे हैं, लिबर्टी, right? Liberty was a company, Liberty Pan Healthcare, Motilal Oswal Private Equity invested at 4 times revenue multiple. Neo Secondaries Fund has invested in Noble Hygiene at 2 times sales. So मैं क्या बोल रहा था, मुझे सस्ता मिलता है? Answer is a yes. Is this company in business for the last 10 years? Answer is a yes. तो डिस्कवरी नहीं करनी है. क्या ये कंपनी लीडर है? 100% लीडर है, राइट? सो बेसिकली ये कंपनी आपको अवेलेबल नहीं है, लीडर है, 20% रेवेन्यू ग्रोथ है और नियो के फंड को सस्ता मिला है, आंसर यस है. सो दिस इज आवर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन दिस फंड. Second investment in this fund is a company which is India's second largest beauty and personal care company. So, like Nykaa, this is a company which dominates tier 2 and tier 3 cities. And some of you might have seen branches of Purple. Some of you might be consumers of Purple, right? Purple is India's second largest beauty and personal care company. Once again, look at the revenue growth. 30%, 29% CAGR, 30% CAGR. अब मैं क्या बोल रहा हूं कि एक 30% कंपनी जो लीडर है उसमें मेरे ना 20% ही बनने चाहिए मनीष भाई. मैं 20 से ज्यादा नहीं माना. And this company actually is better than Nykaa. You look at the gross margin. Nykaa 40%, Purple 48%. And why is it? Because this has more ingrown brands. इसमें ज्यादा खुद के brands है. That's why, right? And have we got it cheaper? Yes, we have got it cheaper. Nykaa is trading. जब हमने ये डील की थी, Nykaa was trading at 6 times sales. Today, Nykaa is trading at 7 times sales. I got it at close to 5 times sales. So once again, second largest company. Have I got it cheaper than Nykaa? Answer is yes. Revenue growth 30%. अगले 3 साल में IPO जाएगा, 100% IPO जाएगा. और जूस किसको मिलेगा IPO को? People who invest in this fund. This is the third company that we have invested in. दिस इज इंडियाज लीडिंग एआई एंड एनालिटिक्स कंपनी. अब ये कंपनी वापस से पब्लिक डोमेन में नहीं है. दिस इज अ कंपनी कॉल्ड फ्रैक्टल डॉट ए आई. इंडिया का लीडिंग एआई कंपनी है. नाउ व्हाट डज दिस कंपनी डू? इट प्रोवाइड्स एनालिटिक्स एंड एआई कंपनीज टू फॉर्चून 500 कंपनीज. तो दुनिया के जो फॉर्चून 500 कंपनीज है ये उसको सर्विस करता है. इट्स एक्चुअली प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू गूगल्स ऑफ द वर्ल्ड, मेटाज ऑफ द वर्ल्ड, वीजाज ऑफ द वर्ल्ड, यूनिलीवर्स. तो आप इसके क्लाइंट सेट देखो, उस क्लाइंट सेट तक पहुंचने में ही दम लग जाएगा. यू डोंट गेट एंट्री इनटू गूगल टू प्रोवाइड एआई सर्विसेज टू गूगल. दैट मीन्स दिस कंपनी इज ट्रूली स्पेशल. Why did this opportunity exist? Because an existing inventor wanted a partial exit. What I was trying to tell you, Manish, by some existing investor wants a partial exit, right? And at Neo, look at the revenue growth. Last 10-year revenue growth 32% compounded. So basically what I'm trying to tell you is we are investing in a portfolio of leaders. If I look at a competitive analysis, Latent View is trading in the market at 8 times sales. Persistent Systems ये आसपास के कंपनीज है, ये लीडर्स नहीं है. फ्रैक्टल इज अ लीडर. तो एक तो जमीन आसमान का डिफरेंस है. बट इफ आई टेक लेटेंट व्यू ट्रेड्स एट 8 times sales. We have got Fractal at 6 times sales. So we have got it at a substantial discount. Fractal will go to IPO. Some of you can do a Google search in the next 12 to 18 months. तो clearly आपको लिस्टिंग पॉप दिखेगा NAV में. This is another beautiful company. This is our fourth investment. अब ये कंपनी ना आपको पब्लिक मार्केट में मिलेगी ही नहीं. ये कंपनी क्या करती है? जैसे यू गो टू HDFC बैंक. HDFC बैंक का जो डिजिटल KYC होता है उसका बैकएंड is done by this company which is called IDFI. IDFY is the name of the company. So HDFC बैंक का KYC करता है, Amex का क्रेडिट कार्ड का KYC करता है. फिर जैसे जो जोमेटो के एम्प्लॉयज होते हैं जो डिलीवरी करते हैं, राइट, their digital onboarding is done by this company. So now fintechs, when fintechs give loans, the bank statements which are read digitally are done by IDFI. India में there is something called as Data Privacy Act which is coming. Data privacy का ये front runner है. So basically IDFI, which is the name of this company, is like K fintech 20 years back. अब ये company is not available to you. Look at the revenue growth. 55% compounded revenue growth for the last 4 years. 80% gross margin.
80% gross margin and 50% revenue growth. So, in a nutshell, what we are trying to do is in the secondaries fund, we want to invest in a portfolio of leaders. Leadership kya hai? India's largest adult diaper, India's leading AI analytics, India's second largest digital KYC, India's second largest beauty personal care. चारों कंपनी में हमको डिस्काउंट मिला है, 100% डिस्काउंट मिला है बिकॉज मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड किया है. रेवेन्यू ग्रोथ, ID5 50% consistent revenue, Purple 30%, Fractal 32%, Noble Hygiene 20%. सो रेवेन्यू ग्रोथ सब में 30%, 20%, 50%. सबकी आईपीओ जल्दी आएगी. सो इन अ समरी, इफ आई हैव टू समराइज दिस, very unique opportunity, very unique companies, completely non correlated to what our clients are currently doing through mutual funds, and opportunity to make outsized returns because एक तो फंडामेंटल रिटर्न है, प्लस डिस्काउंट का रिटर्न है, प्लस लिस्टिंग पॉप का रिटर्न है. तीन फैक्टर काम कर रहे हैं क्लाइंट्स के लिए, और ये बहुत बड़ी चीज होती है कोई भी स्ट्रेटेजी में. थ्री फैक्टर्स रेयरली वर्क, मनीष भाई. So overall, as part of this, what do we want to deliver to clients? It is now 6 year fund. Actually 6 years नहीं है, 4.5 साल की तरह बिहेव करेगा बिकॉज मैं इंस्टॉलमेंट्स में पैसे लूंगा और फिर धीरे धीरे आपको इंस्टॉलमेंट्स में लौटाने लगूंगा. तो look at it like a 4.5 year fund, because today we are only taking 40% as drawdown. The balance money we will take over the course of the next 12 to 15 months, as many of you are familiar. This is the AIF category 2. So tax is in the hand of the clients. It is as tax efficient. इसमें mostly long term capital gains ही लगने वाला है. तो सुपर टैक्स एफिशिएंट है, 4.5 साल का फंड है, 24 से 25% रिटर्न बन सकता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल यू, विच विल गिव ऑल ऑफ अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. Manish bhai, we launched this fund, as you know, 2.5 months back. In 2.5 months itself, we have raised 800 crores. That means clients want to own this fund. They want to own these companies, right? And that is why I think Manish bhai was very insistent ki Hemant, we have to launch it for our partners on the Funds India platform, because these are unique opportunities which no other asset management firm is offering to partners. So from a client perspective, what is in it for clients? सॉरी, जस्ट वन सेकेंड. बेसिकली खर्चा पानी के बाद क्लाइंट्स के हाथ में नेट नेट 21 से 21% आईआरआर बनने का चीज है, राइट? So if we end up making close to 25% IRR, clients can end up making close to 21% post fees and post परफॉर्मेंस फीस. और 12% के ऊपर ही हम परफॉर्मेंस फी लेते हैं. तो 12% अगर बनाया नहीं तो क्लाइंट से परफॉर्मेंस फी लेंगे नहीं. सो फॉर यू, व्हेन यू गो टू अ क्लाइंट, यू हैव टू टेल हिम कि दिस इज अ फंड जहां आपको एक पोर्टफोलियो मिल रहा है. ये कंपनीज आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते पब्लिक मार्केट्स में. लीडरशिप है, सब कुछ प्रॉफिटेबल है, 10-10 साल से कंपनी चल रही है. तो बेसिकली रिस्क बहुत कम है, जल्दी पैसा आएगा, शॉर्टर ड्यूरेशन फंड है, और ग्रॉस पे 24, 25, 26% बन सकता है, नेट में हाथ में 21% आ सकता है प्री टैक्स. द ब्यूटी इज नॉन कोरिलेटेड टू पब्लिक मार्केट्स. Last 3-4 years, the returns clients have made will be typically in the range of 13 to 17% through mutual funds. So this is clearly adding a lot of alpha to a client's life, okay, and unique companies. So that is the opportunity in sum and substance. I will pause here, Manish bhai, for some questions that partners have.